हेलो एवरीवन, कैसा है आप लोग। तो आज के न्यूज़पेपर में एक ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल मुझको दिख रहा है, हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मेजर्ड। तो चलिए देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। जस्ट अ सेकेंड। वैसे बहुतों का इमोशन जुड़ा हुआ है इस वर्ड से, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे इस फेज से गुजर रहा था। चलिए देखते हैं क्या है। When the Periodic Labor Force Survey (PLFS) Periodic Labor Force Survey was released in 2017, it revealed the unemployment rate of India to be 6.1%, the highest ever recorded in India. The PLFS, that is Periodic Labor Force Survey of 2021 and 22, showed unemployment reducing to 4.1%, much lower than before, but higher than some developed countries' economies. The US unemployment rate fluctuated between 3.5% in July 2022 to 3.7% in July 2023. However, the economies of the US and India are very different. The former is more industrialized, while the latter is characterized by a large informal sector. फॉर्मर मने यूएस की बात हो रही है, लेटर मने इंडिया की बात हो रही है। इंडिया लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर है, यूएस में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, इसलिए मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड है। एज सच द मेथड यूज टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट आर वेरी डिफरेंट। ओके, होना भी चाहिए जब चैलेंजेस डिफरेंट है तो। डिफाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिनोनिमस विथ joblessness. The International Labour Organization (ILO) defines unemployment as being out of a job, being available to take a job, and actively engaged in searching for work. Therefore, an individual who has lost work but does not look for another job is not unemployed. तो अगर मेरे पास जॉब है और जॉब छोड़ के बैठा हूँ, दूसरा जॉब नहीं खोज रहा हूँ, तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ, क्योंकि मैं खोज नहीं रहा हूँ। यू मस्ट बी एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब टू बी अनएम्प्लॉयड। द लेबर फोर्स इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड द अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स का मतलब कितने एम्प्लॉयड है और कितने अनएम्प्लॉयड है, दोनों का सम। Those neither employed nor unemployed, such as students, and those engaged in unpaid domestic work are considered out of labor force. Unemployment rate is measured as the ratio of unemployed to the labor force. The unemployment rate could also fall in an economy is not generating enough job, or if people decide not to search for work. In the US, the employment to population ratio (EPR) in 2019 was 60.8, while the unemployment rate was 3.7. In 2022, the EPR was 60, but the unemployment rate had fallen to 3.6%. एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब एम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन के हिसाब से कितने लोग एम्प्लॉयड है, वो 60.8 है था 2019 में, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7 था। और जबकि 2022 में 60 हो गया, थोड़ा कम हो गया, और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया, देख रहे हैं। इवन दो देर वर फ्यूअर जॉब एज अ proportion of total population, the unemployment rate was lower because many individuals had exited the labor force. Measuring unemployment in India. The situation is complicated in developing economy because decision to search for job are constrained by social norms. According to 2009-10 survey undertaken by the National Sample Survey Organization (NSSO), 33% of rural women and 27% of urban women aged 15 and above who were engaged in domestic work reported willingness to work if they were made available within the premises of the household. दिस रिप्रेजेंट्स, मतलब आप देखिए यहाँ पे काम चाहिए पर उसका कंस्ट्रेंट क्या है, घर के आसपास काम चाहिए, ये है। दिस रिप्रेजेंट्स 18.8% ऑफ रूरल फीमेल पॉपुलेशन एज 15 एंड अप। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR for rural women that year was 26.5%. These women would not counted among the unemployed because they are not actively looking for work. A definition of unemployment
that focuses on actively searching for a job may underestimate the true picture of a developing economy. क्योंकि ये कंस्ट्रेंट्स वो मेजर नहीं करता, ये डेफिनेशन आपका साफ बोलता है जॉब जो खोज रहा है और जॉब नहीं है वो अनएम्प्लॉयड है। पर यहाँ पे तो कंस्ट्रेन आ गया ना कि खोज रहे हैं पर यहाँ पे खोज रहे हैं, नहीं तो नहीं करना। जॉब है पर यहाँ पे मिलेगा तभी करेंगे। इसीलिए ये डेफिनेशन ट्रू पिक्चर नहीं देता है डेवलपिंग इकोनॉमीज की। Measuring unemployment in India is difficult due to informal nature of jobs. Unlike developed economies, individuals do not hold one job year round. An individual may be unemployed this week but may have worked as a casual labor last month. And as a farmer, the most of the year are they counted as unemployed. The NSSO adapts two major measures for classifying the working status of individual in India: the usual principal and subsidiary status (UPSS) and the current weekly status (CWS). देखते हैं क्या है। In individuals' principal status, whether employed, unemployed, or out of labor force, is based on activity in which they spent relatively long time in the previous year. A person who is not a worker according to principal status would still be counted as employed according to the UPSS if they were engaged in some economic activity in a subsidiary role for a period not less than 30 days. Thus, an individual unemployed for 5 months and working for 7 months in previous year would be considered a worker according to a principal status, while an individual unemployed for 9 months but working for 3 months would be counted as employed as per UPSS. The CWS adopts a shorter reference period of a week. CWS आपका वीकली स्टेटस है, ये सब्सिडियरी स्टेटस है। तो weekly status adopts a shorter reference period of a week. An individual is counted as being employed if they have worked for at least 1 hour on at least one day during a 7 day preceding the date of survey. UPSS, that is usual, principal and subsidiary status. UPSS unemployment rate will always be lower than CWS rate because there is greater probability that an individual would find work over a year as compared to a week. आप समझिए इस चीज़ का, ये हफ्ते में काम पाना थोड़ा मुश्किल होता है पर साल में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। इसीलिए यूपीएसएस हमेशा आपका जो होगा सीडब्ल्यूएस से लोअर होगा क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट रेट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट साल में कम होगा, वीकली ज़्यादा होगा क्योंकि ज़रूरी नहीं ना हर वीक में सबको काम मिले, पर ईयरली उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। The lower bar for classifying an individual as employed explain why unemployment rates are lower in rural areas than urban. In agrarian economies, where individuals have access to family, farm, or some form of casual agrarian work, there is greater probability of finding some kind of work when compared to urban areas. This definition may underestimate unemployment, but they were largely designed to capture the extent of the informal economy. The Center of Monitoring India Economy classifies individuals based on their activity in a day preceding the interview. They therefore estimate a higher unemployment rate but lower labor force participation rates. This is because in an informal economy there is a lower chance of individual having work on any given day as compared to longer period of the week or a year. One cannot say which of the following framework is right or wrong, for this represents an unavoidable trade-off in developing economy. Adapt too short a reference period and one gets higher rate of unemployed and lower of the employed and vice versa. जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया, साल भर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम दिखेगा पर वीकली बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। दिस dilemma does not arise in developed nation where work is largely regular over a year. Lockdown effect. The lockdown announced in March 2020 was profound disruption to the Indian economy, but this wasn't reflected in PLF's unemployment rate, which covers the period between July of one year to June of the next year. The lockdown would have been covered in the last quarter of the 2019-20 PLFS, its after effects seen in 2020 and 2021 PLFS. However, unemployment rate measured both the UPSS and CWS standard fell in 2019-20 and 2020-21
considered an individual with regular employment who loses work in March 2020 according to the UPSS status. Just a second. According to the UPSS status, this individual would be considered employed since they spent more of the previous year employed. If those individuals who lost jobs during the lockdown find employment in the time less than 6 months, they would never be counted as unemployed or बाय द यूपीआई, क्योंकि 6 महीने से पहले ही जॉब मिल गया, तो साल खत्म होने से पहले जॉब मिल गया, तो यूपीएसएस में उनको एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड क्यों दिखाया जाएगा? उधर तो एम्प्लॉयमेंट मिल गया ना, ये साल भर की बात होती है इसमें. द CWS criteria with a shorter reference period would record higher unemployment rate. However, the measures presented in the PLFS report are an aggregation of interviews conducted across the year. If those rendered jobless by the lockdown were able to find employment relatively quickly, the CWS unemployment rate for the lockdown period would show high unemployment, but not so for subsequent period. When averaging across these different periods, the CWS rate for the entire year would show a lower measure. This can be seen in table 2. ठीक है, देख लेंगे table 2, which show urban CWS employment rate इतना इतना. ठीक है, the CWS employment over the year would not be. ठीक है, unemployment is shaping up to be an important factor in the upcoming election. In order to successfully tackle it, it is important to understand how it defined measure इतना. ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही था. बाकी मैं आप लोगों को बताता हूँ इस आर्टिकल में और क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जस्ट अ सेकेंड. देखिए, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन, जो एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब, वो हो जाता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस आर्टिकल में. और दूसरा PLFS क्या है आपको पता होना चाहिए, जो इस आर्टिकल में मैंने बताया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. ठीक है, एंड आपको ये पता होना चाहिए इंडिया वर्सेस US, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्यों अलग अलग तरीके से काउंट होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर है, यहाँ पे इनफॉर्मल ज़्यादा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसलिए. और दूसरा एक NSSO क्या है आपको पता होना चाहिए, और इसमें 2 तरीके से ये फाइंड करते हैं, UPSS एंड CWS. ये ईयरली बेसिस पे करते हैं, ये वीकली बेसिस पे करते हैं. तो ऑब्वियसली ईयरली बेसिस पे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कम आएगा. पर वीकली बेसिस पे, जैसे कोरोना टाइम में वीकली तुरंत बहुत लोगों की जॉब गई, तो उस वीक अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट होगा आपका बहुत हाई होगा. पर अगर उसको साल से कंपेयर करें, हो सकता है 6 महीने में आधे लोगों को जॉब मिल गई हो कहीं ना कहीं IT कंपनी में, तो ये डेटा UPSS में आएगा, इसलिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम आएगा, यहाँ पे ज़्यादा आएगा. तो ये चीज़ एक आपको पता होना चाहिए. इसका फुल फॉर्म है आपका यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस. यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, इसका है आपका करंट वीकली स्टेटस. तो यहाँ पे वीकली स्टेटस है, प्रिंसिपल सब्सिडियरी स्टेटस है, और हाँ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. और NSSO मैंने बताया आपको, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इस आर्टिकल के हिसाब से. और इस आर्टिकल में ऐसा हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है. एक EPR होता है, तो EPR खैर वो US के टर्म्स पे है. यहाँ पे हमने देखा EPR, जिसको बोला जा रहा है एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो. तो खैर ये US में एसोसिएटेड है. हमारे इंडिया के हिसाब से NSSO ने 2 चीज़ बताई है, UPSS और CWS. ये ईयरली है, ये वीकली है. हमारे लिए इस आर्टिकल में बस इतना ही इम्पोर्टेंट होता है. अरे भाई, पढ़ाई लिखाई करो, अनएम्प्लॉयमेंट छोड़ो, जॉब पकड़ो, काम करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस पढ़ लो. और प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स टू एंड ऑल्सो टू इरेडिकेट योर अनएम्प्लॉयमेंट. सो थैंक यू एंड वर्क हार्ड.